Good morning, dear friends. How are you? All right, you are fit and fine. Great. I hope you are doing well. Okay. So, dear students, in previous period we have talked about Dr. Dolittle and how Dr. Dolittle, once upon a very famous doctor, came to and he became poorer and poorer. Now he had no patients. Okay, and he had नो अर्निंग्स एज वेल. ओके, अब उनकी अर्निंग्स भी नहीं है, बट दो instead of best people he liked the animals best, means this Dr. Dolittle was fond of animals. Okay, so whatever story we have done, dear students, I hope you have understood it well. Okay, now let's see reading comprehension. Whatever we have read, let's see how much we have understood. Okay, so please open page number 53 of your English textbook. All right, great. So let's do understanding what we read. So please take your pencil with you and we have to do these answers, okay, in the book itself. So first question, understanding what we read section. Question A, take the right answer. Okay, these are the MCQ multiple choice questions. One question is given there and three options are given, A, B, C. We have to read it loudly and select the best, tick the right to the best answer. Okay, so first question is, how do we know that Dr. Dolittle was a proper doctor? हमें किस बात से पता चलता है कि डॉक्टर डोलिटल एक सही मायने में डॉक्टर थे? बिकॉज ए, ही न्यू अ होल लॉट, वो काफ़ी जानते थे. पीपल सेड ही वॉज अ क्लेवर डॉक्टर. सी, ही हैड स्टडीड अ लॉट एंड डन हिज MD. सो व्हाट डू यू थिंक, डियर स्टूडेंट्स, विच ऑप्शन इज करेक्ट? Yes? All right. So dear students, as we come to know that people used to call him MD. Okay, MD means Doctor of Medicine. Okay, so he had studied a lot, मतलब उन्होंने काफ़ी पढ़ाई कर चुकी थी वो डॉक्टर की मेडिसिन की, and done his MD. Okay, so Doctor of Medicine. So this is the C answer. Number second, how do we know that lots of people like the doctor? हमें किस बात से पता चलता है, कैसे पता चला कि डॉक्टर को काफ़ी लोग पसंद किया करते थे? ऑप्शन ए, everyone called him clever. Option B, the people called him clever and the children and animals all ran after him. Or the C, even the crows nodded their heads and cawed when they saw him. So which one is the correct and best answer as per you? Yes, the option B. Yes, dear students, take the option B. The people called him clever and the children and animals all ran after him. उनके पीछे दौड़ते थे. Yes, correct. Next, move to the next question. Who helped Dr. Dolittle to look after his house and garden? डॉक्टर डोलिटल को कौन उसके गार्डन और हाउस देखने के लिए कौन मदद करता था? फर्स्ट ऑप्शन इज, his sister Sarah Dolittle helped him to cook after his house and garden. Second, he and his sister looked after the house and the garden. Number C, his sister looked after the house and he looked after the garden. So what is the correct answer? The correct option is, yes, correct, C. As we have seen in the story, his sister looked after the house and he looked after the garden. Great. Number 4, how do we know that Dr. Dolittle was very fond of animals? किस तरह से हमें पता चलता है स्टोरी में कि उन्हें एनिमल बहुत ही पसंद थे? सो द ऑप्शन इज, he had many different kinds of animals, birds and even goldfish in his house and garden. Number B, there were animals all over his house. Or number C, he had goldfish in a pond and animals in his house. So which one is the correct, which is the suitable answer? Yes, option A. So how do we come to know that Dr. Dolittle was very fond of animals? So we come to know from that because he had many different kinds of animals, birds and even goldfish in his house and garden. All right, okay. दोस्तों, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है. आप ध्यान से सुनिए और अपने बुक में करिए. ओके, नाउ नंबर 5,
Who was the only person who kept coming to the doctor for medicine once a year? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो डॉक्टर के पास में मेडिसिन के लिए सिर्फ साल में एक बार आता था? Who was that man? That is Squire Jenkins, the parson, or the cat's meat man. So chalo go to back. Okay, remember I have told you, yes, that is the option C, that is the cat's meat man. Okay, number 6, who still loved Dr. Dolittle even when he became very poor? आज जबकि डॉक्टर डोलिटल बहुत ही पुअर, गरीब हो चुके थे, तब भी उनसे कौन प्यार किया करता था? कौन प्यार करता है? द चिल्ड्रन, द पीपल, और द चिल्ड्रन एंड द एनिमल्स? यस, ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी. ओके, द चिल्ड्रन एंड द एनिमल्स still loved Dr. Dolittle even he became very poor. All right, I hope dear students you have understood it well. Learn these answers and remember these options, okay, for the exams. Okay, go to the next page number 54. Now let's come to page number 54. Match the following to make sentences. Okay, dear students, we have to do this as a homework. Okay, हमें homework करना है और इसको हमारे कॉपी में कंप्लीट करना है. नाउ इस मैच द फॉलोइंग टू मेक सेंटेंसेस कैसे करेंगे? हमें ये सेंटेंस अपने कॉपी में लिखना है और इसके साथ में जो इनमें से ऑप्शन सही होगा इसका रीज़न. ओके, इन दिस साइड द थिंग्स आर गिवन एंड वो एक्शंस की हुई है उसका रीजन. ओके, देयर रीजन इज गिवन ऑन द सेकंड कॉलम, इन द सेकंड कॉलम. ओके, सो लेट्स, आपको कॉपी में इनके साथ में जो ऑप्शन होगा वो उसको सामने में लिखकर लर्न करना है. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट? सारा डोलिटल यूज्ड टू ग्रम्बल. ओके, वो कंप्लेंट करने लगी. ओके, क्यों? व्हाई? व्हाट इज द ऑप्शन? सारा डोलिटल यूज्ड टू ग्रम्बल. सो ऑप्शन इज because okay, because the animals made the house untidy. Okay, so because the animals made the house untidy. Okay, तो पहले का आंसर है ई. ओके, तो आप किताब में ऐसे कर दीजिएगा दोस्तों, लेकिन आपने कॉपी में ऐसे लिखोगे सारा डोलिटल यूज्ड टू ग्रम्बल बिकॉज द एनिमल्स मेड द हाउस अनटिडी. ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेकंड. द ओल्ड लेडी विद द रूमेटिज्म. रूमेटिज्म इज अ पेन इन जॉइंट. हमारे पैरों के जोड़ों का जो दर्द होता है उसको रूमेटिज्म कहते हैं. द ओल्ड लेडी विद द रूमेटिज्म स्टॉप्ड कमिंग टू सी डॉक्टर डोलिटल. वो डॉक्टर डोलिटल की तरफ आ ही नहीं उसके बाद. बिकॉज व्हाट हैड हैपेंड विथ हर, उसके साथ में क्या हुआ था? बिकॉज शी हैड सैट ऑन टॉप ऑफ अ हेडहॉग स्लीपिंग ऑन द सोफा. ओके, वो आ ही नहीं क्योंकि शी हैड वंस अपॉन अ टाइम, जब वो आई थी पहली बार तो शी हैड सैट ऑन अ टॉप ऑफ हेडहॉग स्लीपिंग ऑन द सोफा एंड शी वॉज ग्रेटली अफ्रेड एंड दैट्स वाई नाउ आफ्टर दैट शी वेंट टू द नियर बाय टाउन. So option F is there. All right. Then number C, Sarah Dolittle was angry. Sarah Dolittle, she was the sister of John Dolittle, doctor. So why she was angry? Because due to his nature, they were getting poorer. Means option D, they were getting poorer. So and that's why she was angry. Dr. Dolittle was not worried. लेकिन डॉक्टर डोलिटल को कोई भी चिंता नहीं थी. क्यों नहीं थी? बिकॉज डॉक्टर डोलिटल वॉज नॉट वरीड बिकॉज ही लाइक्ड एनिमल्स बेटर देन द बेस्ट पीपल. जो समाज के बेस्ट पीपल थे उनसे भी ज़्यादा ये एनिमल्स को पसंद किया करता था. ओके, सो दिस इज द ऑप्शन जी इज देयर. देन द डॉक्टर स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी. डॉक्टर किस चीज़ों पर लॉट ऑफ मनी खर्च करता था एंड क्यों करता था? उनके पैसे क्यों खर्च होते थे ज़्यादा? द डॉक्टर स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ही हैड टू फीड सो मेनी एनिमल्स. ऑप्शन ए, बिकॉज ही हैड टू फीड सो मेनी एनिमल्स. उनके गार्डन में, उनके बगीचे में, उनके फार्म में, उनके क्लिनिक में काफ़ी एनिमल्स थे. डे बाय डे उनकी संख्या बढ़ती गई, इसलिए उनका खर्चा भी बढ़ता गया. Number 6, at first the doctor didn't have to worry. At first the doctor didn't have to worry. Why? शुरुआत में डॉक्टर को चिंता करने की जरूरत नहीं थी. क्यों?
because he had some money saved up in his money box, क्योंकि शुरुआत में उनके मनी बॉक्स में कुछ उन्होंने पैसे अपने जमा करके रखे थे, इसलिए उनको शुरुआत में चिंता नहीं हुई. नंबर 7, द माइस हैड टू लिव इन द ब्यूरो ड्रॉवर. ओके, जो ड्रॉवर था उसमें रहना पड़ा. पहले दे यूज टू लिव इन पियानो. ओके, सो क्या हुआ, क्यों द माइस हैड टू लिव इन द ब्यूरो ड्रॉवर, बिकॉज द पियानो दे लिव्ड इन हैड बीन सोल्ड, क्योंकि उसको बेच दिया गया था. ओके, तो ऑप्शन एच इज देयर. द डॉक्टर सोल्ड हिज ब्राउन सूट. एट लास्ट द डॉक्टर सोल्ड हिज ब्राउन सूट एज वेल. ओके, सो व्हाट इज द रीजन व्हाई? बिकॉज द मनी ही हैड गॉट फॉर द पियानो वाज गेटिंग यूज्ड अप. खत्म हो चुके थे और उसके लिए उसको अपना कोड भी बेचना पड़ा. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड the consequences and the reason why these things had happened in the story, and you come to know the reason क्यों हुआ वो, why. Okay, you know the reason. Okay, so please write down these sentences with their proper reasons and learn them well. Okay, now let's move to next section, spelling and vocabulary. Okay, now spelling and vocabulary section, let's see. Read aloud these words beginning with CR. Add more such words. Okay dear students, आपको CR से, C and R इस consonant से शुरुआत होने वाले कुछ शब्दों को we have to read loudly and we have to add our more. Okay, हमें कुछ अपने खुद के भी लिखने हैं. So repeat after me. crab, creep, creep, crow, crumb. Okay, चलो next. Crow is create, sorry, so create. Okay, then cream, okay, cricket. All right, crown. Okay, CROW, crown. Okay, so these are words you can write on your own. Dear students, to learn spellings and vocabulary you have to use your own words. All right, now let's move to the next. Number B, read the words in the columns, pick the name of the type of the things in each list and write it in the blank space at the top of each column. Now what happened, यहाँ पर कॉलम में कुछ नाम्स दिए, एनिमल्स, बर्ड्स के नाम दिए हैं. ओके, कुछ एनिमल्स के नाम दिए, कुछ बर्ड्स के नाम दिए गए. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट देयर दोज इन अ पर्टिकुलर कॉलम, मतलब उनकी कैटेगरी में हमको डिवाइड करना है. जैसे अगर वो नाम बर्ड्स के होंगे तो उसके ऊपर हमें फार्म बर्ड्स लिखना है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम होंगे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऊपर का कैटेगरी लिखनी है. अगर फार्म एनिमल्स होंगे तो उसको फार्म एनिमल्स लिखना है. और वाइल्ड बर्ड के ही अगर एग्जाम्पल होंगे तो हमें उसके ऊपर भी वाइल्ड एनिमल या वाइल्ड बर्ड्स लिखना है. ओके, सो फर्स्ट कॉलम इज ईगर, क्रेन, कुकू, owl, parrot, pigeon and turkey. So these are the animals, these are the birds. So these animals will fall in which category? So these are the farm birds or wild birds. These are the wild birds. So please write down here wild birds. All right. Okay. Then second, we have the second column: buffalo, calf, cow, elephant, goat, horse and sheep. So dear students, which type of animals all these are? So these are all falls into the farm animals. All right. Now it's very easy. Okay. Then bongos, drums, guitar, mobile phone, piano, sitar and xylophone. All these comes in musical instruments. All right. How easy it is. All these are the instruments, musical instruments. Okay. And then last, chicken, hen, duck, ducklings, geese, hawk and rooster. So dear students, all these animals are, all these birds are farm birds. Okay. So
I hope you have understood this activity. Please do this activity into your book and learn it well. Okay, I hope you have understood these things. So dear students, learn at home, do study at your home. Okay, write down and mention it into your copy and notebook. Do study at home. Take care. See you.